Hello friends, today through this video I would like to tell you how to match the information with the specific things. So we will do the reading with the technique RUP method which I have discussed in my previous videos. So first what we will do, we will read the title, Read and Left-Handedness in Humans. So this is the title of the passage. Now we will read the questions. Question 1 to 7. Match the personalities listed A to A with the opinions below using the information in the text. Fill in boxes 1 to 7 on your answer sheet with relevant letter. And B. Some people have more than one point of view. तो यहाँ पे क्या है A to E में से आपको एक एग्जैक्ट लेटर लिखना है. फाइन. तो सम पीपल हैव मोर देन वन पॉइंट ऑफ व्यू. तो कुछ भी हो सकता है कि जो लोग हैं उनके मोर देन वन पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकते हैं. मीन्स वी हैव 7 क्वेश्चंस एंड देयर आर 5 पीपल. इट मीन्स द 2 पर्सन्स, इसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ऐसे होंगे जिसने ज्यादा ओपिनियन दिए होंगे. सो वी कैन रिपीट दैट पर्सन but not the name of the person. We just have to highlight the letter. A is for Dr. Broco, B for Dr. Brinkman, C for Gershwin, D for Charles Murray, E for Professor Turner. The first statement is, when humans first created language, they begin to exhibit an inclination for right-handedness. Second, left-handed people face bias in society. Third, relative to females, males have a greater probability to be left-handed. Fourth, left-handed persons recover their speech faster than right-handed ones after a stroke. Fifth, people who have stroke on the left side of their brain generally lose their ability to speak. Sixth, before birth, the 2 sides of the brain develop different functions. Seventh, asymmetry is a characteristic of the human body. तो अभी हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चंस को रीड कर लिया. अब हम क्या कर लेंगे, कीवर्ड कि ह्यूमन ने जब फर्स्ट लैंग्वेज क्रिएट की थी तो राइट हैंडेड इंक्लिनेशन हुई थी. लेफ्ट हैंडेड वाले फेस करते हैं बायसनेस को. फीमेल के कंपैरेटिवली मेल्स क्या करते हैं, ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड होते हैं. लेफ्ट हैंडेड पर्सन रिकवर करने में स्पीच में फास्टर हैं दैन द राइट हैंडेड आफ्टर अ स्ट्रोक. कंपैरिजन हो रहा है. पीपल जिनको स्ट्रोक होता है लेफ्ट साइड पे उनकी एबिलिटी चली जाती है टू स्पीक. 6 बर्थ, बिफोर बर्थ से पहले 2 साइड ऑफ द ब्रेन डेवलप करती हैं डिफरेंट फंक्शंस को. असिमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अभी हमें क्वेश्चंस के बारे में हिंट हो गया. नाउ वी विल मूव टू द पैसेज. Why do humans, who are essentially the only left or the right-handed animal species, exhibit this trait? Such clear lateral asymmetry, as psychologists refer to it, is not even present in our nearest ancestors among the apes. Yet it's appear that 90% of the human populations throughout the history have been right-handed. After reviewing the evidence on the left-handedness, Professor Brian Turner from Deakin University discovered that handedness and sidedness go hand in hand. Hence, 8 out of 10 persons are right-footed and 9 out of 10 are right-handed. In the human population, he observed there is a distinctive asymmetry that itself systematic. तो यहाँ पे ब्रायन टर्नर क्या बात कर रहे हैं, ब्रायन टर्नर डेक्कन यूनिवर्सिटी. तो यहाँ से टर्नर का व्यू पॉइंट चल रहा है और आगे उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है. ही ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व किया है कि डिस्टिंक्ट असमिट्री होता है दैट इटसेल्फ सिस्टमैटिक. तो असमिट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी. यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है. किसका ओपिनियन है ये, ब्रायन टर्नर का है. ब्रायन टर्नर के लिए कौन सा है, प्रोफेसर टर्नर. ई करके बात हो रही है. फॉर क्वेश्चन 7 वी विल मार्क द लेटर ई. तो यहाँ से आरयूपी मेथड से सबसे पहले सॉल्व होने वाला क्वेश्चन कौन सा था, 1. मैं बार बार स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ दैट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपके सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो सिक्वेंशियली सॉल्व हो. तो प्लीज कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड एंड यूज दिस टेक्निक फॉर सॉल्विंग योर रीडिंग. Left and right, up and down, black and white, in such a way humans categorize their thoughts into. We can group things that are essentially unclear using these collection of signals. Handedness
has a genetic and inherited component. According to the research, despite the notion that left-handedness typically runs in families, neither left nor right-handed adults are guaranteed to give birth to children who share their handedness. In fact, only about 6% of the children who with two right-handed parents are left-handed. Yet if both parents are left-handed, then maybe 40% of the offspring will be, as 15 to 20% of the offspring will be left-handed in both parents are right-handed. 1 in 6 pairs of identical twins who share the same of their genes will have different handedness. तो यहाँ पे और किसी के बारे में बात नहीं हुई है. अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं. आगे किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो रही है हमारी. If it is not just genetic, what causes people to be left-handed? Researchers are looking to the brain for hints as to what additional elements might be at play. Dr. Paul Broca, a French physician, अब पोल ब्रोका के ओपिनियन आ रहे हैं. फ्रेंच फिजिशियन है एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसने डिस्कवर किया था 1860 में जो स्ट्रोक विक्टिम्स होते हैं लॉस्ट देयर एबिलिटी टू स्पीक, वो अपनी एबिलिटी जो है स्पीक करने की वो खो देते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड क्लोट इन द ब्रेन. देखो स्ट्रोक को उन्होंने पैराफ्रेज किया, ब्लड क्लोट करके बताया कि जो ब्लड क्लोट होता है उनके ब्रेन में एक्सपीरियंस अ राइट साइड पैरालिसिस. तो यहां से हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 5 में ही बात हुई थी. पीपल हु हैव स्ट्रोक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जनरली लूज देयर एबिलिटी टू स्पीक. यस, और ये कौन बता रहा है? डॉक्टर पोल ब्रोका बता रहे हैं. यहाँ पे उसके ओपिनियन को कंक्लूड किया गया है. For question number 5, we can say we will get the answer and we will mark it as A, क्योंकि डॉक्टर ब्रोका का यही ओपिनियन है. 5th के लिए we will mark A. आगे रीड करते हैं. As the right half of the body is controlled by the left hemisphere of the brain and the left hemisphere by the right, he recognized that the left hemisphere of the brain must have sustained injury. Today, psychologists estimate that 95% of the right-handed people have their language centers in the left hemisphere compared to 5% who have right-sided language. However, the left-handed people do not exhibit the opposite tendency. Rather, the majority also speak from their left hemisphere. 30% of people speak a language from their right hemisphere. डॉक्टर ब्रिंकमैन, अब यहाँ से किसका ओपिनियन स्टार्ट हो रहा है? डॉक्टर ब्रिंकमैन का. अ न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट एट ऑस्ट्रेलियाज नेशनल यूनिवर्सिटी इन कैनबरा hypothesis means claims that the evolution of, मतलब जब स्पीच स्टार्ट हुई थी, corresponding to the preference for utilizing one's right hand. Here I will get the answer of the first question. When humans first created language, they begin to exhibit an inclination for the right-handedness, and Dr. Brinkman has given the same opinion, and some of the words are paraphrased in this paragraph. So we can say फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व हुआ है उसके लिए हम जो मार्क करेंगे डॉक्टर ब्रिंकमैन करेंगे. तो फर्स्ट का जो आंसर बनता है दैट इज बी. आगे कंटिन्यू करते हैं. Brinkman claims that as the brain changed through time, one side grew more adept at precise movement, which is required for speaking, and this change resulted in a preference for the right hand. Brinkman asserts that although most left-handers have a predominance in the left hemisphere, they still have some aptitude in the right hemisphere because left-handers have a more bilateral speaking function. She has noticed that when a left-handed individual has brain damage in the left hemisphere, speech recovery is frequently better. तो यहाँ पे बात हो रही थी फोर्थ क्वेश्चन में कि जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है वो रिकवर करता है स्पीच को फास्टर कंपैरेटिवली राइट हैंडेड पर्सन के आफ्टर अ स्ट्रोक. ब्रिंकमैन ने कहा है कि जो लेफ्ट हैंड पर्सन है वो मोर बायलेटरल स्पीकिंग फंक्शन होता है और उसने ये नोट किया है जो लेफ्ट हैंडेड पीपल है जब ब्रेन डैमेज के बाद लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्पीच रिकवरी उसकी बेटर होती है. तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंडेड वाले का कंपैरिजन किसके साथ होना है? राइट हैंडेड वाले के साथ. तो यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी जिसने ओपिनियन दिया वो डॉक्टर ब्रिंकमैन ही है. तो फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज बी बॉल, क्योंकि बी बॉल किसके लिए यूज किया गया है? डॉक्टर ब्रिंकमैन के लिए गया. आइए आगे रीड करते हैं पैराग्राफ. According to the Brinkman's research on monkeys, primates, monkeys appear to learn a preference for one or both hands from their mothers during the first year of their life.
However, in humans, two hemispheres functional specialization leads to the physical differences. Regions involved in speech production are typically larger on the left side than on the right. One would not anticipate to see such a variation in monkeys as they have not mastered the ability of speech, but Brinkman claims to have found a pattern in monkeys that is similar to the asymmetry found in the human brain. Gershwin and Galbraith, two American scientists who examined the brains of developing human beings, found that the left-right asymmetry already occurs before birth. दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को एग्जामाइन किया था कि जो ब्रेन है डेवलपिंग होती है ह्यूमन बींग्स की वो कब हो जाती है बिफोर द बर्थ जिसमें वेरियस फंक्शंस होते हैं. तो यहां से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया. क्वेश्चन 6 के लिए बात किसने की थी? बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले टू साइड ऑफ द ब्रेन डेवलप डिफरेंट फंक्शंस. ये ओपिनियन किसका था? गैशविन एंड डॉक्टर गैल्बर्डा का था. तो यहां से जो हम मार्क करने जा रहे हैं क्वेश्चन 6 के लिए दैट इज सी. आइए आगे कंटिन्यू करते हैं. But a variety of factors can have impact on how the brain grows. Every brain has a feminine organizational structure at first. It only changes to a masculine structure when the male embryo starts to emit hormones. Gashwin and Gilbert were aware that the right and the left hemisphere of the brain develop at distinct rates of maturation. Additionally, a girl's brain matures a little bit quicker than boys. Therefore, males are more vulnerable to experience problems with the development of their brains during pregnancy, and the left hemisphere is more likely to be involved. Left-handedness and the development of the hemisphere such as logic, rationality, abstraction may arise from the brain being literalized. Therefore, it should come as no surprise that there are more left-handed men than women in the fields of mathematics and architecture. तो बता रहे हैं कि therefore it should come as no surprise that there are more left-handed men than women in the field of mathematics. Surprise. कौन से क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है? Question number 3. Relative to females, males have a greater probability to be left-handed. Yes, they are saying the same thing, but they have paraphrase. क्योंकि ये रीडिंग है तो paraphrase तो हुआ होगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो हमारा ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है? सी. गैशविन का ओपिनियन आ रहा है यहाँ से. तो यहाँ से हम मार्क कर देंगे 3 के लिए. कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? सी. आगे कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को. द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी मे प्रोवाइड सम रिलीफ टू द लेफ्ट हैंडेड पर्सन्स who have spent decades adjusting to a world that was made for the right-handed people, but word is writer and the journalist Mr. Charles Murray as the way the term right maintains its own goodness. Language, according to him, subtly instructs people to believe that everything on the right is safe to trust, while anything on the left is untrustworthy or an evil eye. तो चार्ल्स मोरे ने कहा है कि लोग हमेशा सोचते हैं कि जो राइट साइड पे है वो क्या है? सेफ है, और लेफ्ट वाला क्या है? अनट्रस्टवर्दी है, इवल है. तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी? लेफ्ट हैंडेड पीपल फेस बायस इन सोसाइटी. बायस का तो पक्षपात होना, पार्शियलिटी की जाती है. यस, ही इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि वो जो लेफ्ट हैंडेड वाले हैं वो क्या होते हैं? उनको अनट्रस्टवर्दी समझाता है, इवल समझाता है. इवन कि जो राइट वाले हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं और वो हमेशा सेफ होते हैं. तो यहाँ पे बायसनेस का ओपिनियन क्लियरली हाईलाइट हुआ है. किसने दिया है? यहाँ पे चार्ल्स मोरे ने दिया. कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया. फॉर क्वेश्चन 2 व्हाट वी विल मार्क द ऑप्शन डी, क्योंकि चार्ल्स मोर के बारे में यहीं पे भी बात हो रही है. सो इन दिस वे वी विल मैच द ओपिनियंस विद द पर्सनैलिटीज. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर रीडिंग इन द सेम वे. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू वेरी मच.